So friend, in portfolio management, there are two most important risks involved. Among all the risks, there are two most important risks we need to understand. One is systematic risk and another one is unsystematic risk. Right. Now, exam में question आ सकता है, what are the difference between systematic risk and unsystematic risk? What are the difference between systematic risk and unsystematic risk? So, first and most important, in case of systematic risk, external and uncontrollable factors affect the price of all securities. Means, in case of systematic risk arises from external and uncontrollable factors affecting the price of all securities, right? And unsystematic risk is one type of, you can say, controllable and specific. Means unsystematic risk is a controllable and specific to a particular security or industry, तो systematic risk always uncontrollable factor के ऊपर डिपेंड करता है और external factor, and unsystematic risk always controllable and specific, right? Then second, say no to diversification. Means in case of systematic risk, it cannot be eliminated by diversification, राइट ये जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है ये कभी भी डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एलिमिनेट नहीं हो सकता, जो कि ऑन सिस्टमेटिक रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एलिमिनेट हो सकता है, राइट? तो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क I have written here that yes to diversification, means diversification of portfolio can eliminate on systematic risk. Diversification of portfolio can eliminate on systematic risk. Now comes to third important point, SPE factor. तो SPE factor क्या है ना? SPE factors means social, political and economic event. Means market risk is fluctuate by social, political and economic events and change in investor expectations, right? तो market risk जो है which is fluctuate by social, political and economic events and change in investor expectation, डिपेंड करता है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट के ऊपर एंड ऑल्सो चेंजेस इन इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस. एट द सेम टाइम ऑन सिस्टमेटिक रिस्क क्या है? ये डिपेंड करता है मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर. क्या है ना? बिजनेस रिस्क इज ड्यू टू वोलेटिलिटी इन रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी अराइजिंग फ्रॉम मार्केट कंडीशंस, competition, different type of product, mix of product, etc. So business risk in case of unsystematic risk is due to volatility in revenues and profits of a particular company arising from market conditions, mix of product, competition, etc. But in case of systematic risk, it depends upon social, political and economic event, which is fluctuate the changes in investor expectation, right? Now comes to four most important difference between systematic risk and unsystematic risk. Fluctuation in interest rate. Means systematic risk के केस में क्या होगा ना? इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइजेस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट एंड कॉर्पोरेट डेब्ट कॉस्ट. इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइजेस ड्यू टू fluctuations in interest rate risk and corporate debt cost. Interest rate risk arises due to fluctuation in interest rates and corporate debt cost, and you can write corporate debt cost, right? But in case of unsystematic risk, फाइनेंशियल रिस्क जो है which is associated with the capital structure of a company and increase with higher financial leverage. ऑन सिस्टमेटिक रिस्क के केस में क्या होगा ना? जो फाइनेंशियल रिस्क होगा दैट मस्ट बी एसोसिएटेड विथ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी एंड इंक्रीज विथ हायर फिनेंशियल लिवरेज. जितना फिनेंशियल लिवरेज हाई होगा उतना फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता जाएगा, राइट? तो वो हो जाएगा ऑन सिस्टमेटिक रिस्क. तो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क इज फिनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विथ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी एंड increase with higher financial leverage, right?
Now next most important point number 5, erosion of the value of money due to inflation. क्या है ना, purchasing power risk which is called PPR. Purchasing power risk is the erosion of the value of money due to inflation. Purchasing power risk is the erosion of the value of money ड्यू टू इन्फ्लेशन के वजह से जो परचेजिंग पावर रिस्क होता है वो और भी इरोशन होते जा रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ मनी, राइट. तो इरोशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू इन्फ्लेशन कैसे ना, परचेजिंग पावर रिस्क जो है, परचेजिंग पावर रिस्क इज द इरोशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू इन्फ्लेशन के वजह से परचेजिंग पावर रिस्क जो इंक्रीज होता जा रहा है which is called systematic risk, right. At the same time on systematic risk क्या है ना, default risk arises due to default in meeting financial obligations on time, increasing the insolvency and bankruptcy cost. कैसे होगा default risk arises, कैसे होगा ना, default in meeting financial obligations, default in meeting of financial obligations, right, financial obligations, increasing insolvency, increasing the insolvency and bankruptcy cost, So default risk in case of unsystematic risk arises due to default in meeting of financial obligations, increasing the insolvency and bankruptcy cost, right. तो ये सब तीनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क के केस में. तो दीज आर द डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क. You have to write only 5 points. Then you will secure out of marks, right. तो 7 मार्क का क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन आएगा. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क. एंड ये जो सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क ये ऑल्सो SPMBB स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर भी है, विच इज इन ग्रुप 4, राइट. तो ये बेनिफिट होगा बोथ ग्रुप 3 एज वेल एज फॉर ग्रुप 4, बेनिफिशियल फॉर बोथ ग्रुप 3 एंड फॉर ग्रुप 4, राइट. तो पोर्टफोलियो रिस्क का सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क होता है सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क. सिस्टमेटिक रिस्क डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. ऑन सिस्टमेटिक रिस्क इज ऑलवेज कंट्रोलेबल एंड स्पेसिफिक. एंड सिस्टमेटिक के रिस्क के केस में रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, बट इन केस ऑफ ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड, रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, राइट. Then third, systematic risk depend upon SPE factors. SPE factors, as I discussed, social, political, and economic events and changes in investor expectations. And at the same time, on systematic risk क्या है ना, it depend upon volatility. Business risk is due to volatility in revenues and profit of a particular company arising from market conditions, product mix and competition, etc. Right? Then fluctuation in interest rate क्या है ना, interest rate risk arises due to fluctuation in interest rate and corporate debt cost. At the same time on systematic risk क्या है ना, financial risk associated with the capital structure of a company and increase with higher financial leverage. Higher financial leverage, right. ये है 4th point. And in 5th point you can write that purchasing power risk is the erosion of the value of money due to inflation. Purchasing power risk is the erosion of the value of money due to inflation. And in case of unsystematic risk, a default risk arises
due to default in meeting of financial obligations on time, increasing the insolvency and bankruptcy cost, right? इंक्रीजिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कॉस्ट, ये सब के वजह से जो डिफॉल्ट रिस्क आता है इसे कहते हैं ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। तो बहुत ईजी है। यू ओनली 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क इन केस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो रिस्क के अंदर, राइट? सो दिस इज इट ऑल अबाउट पोर्टफोलियो रिस्क। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।